Assalamualaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are healthy, wealthy, safe, happy and going to school. It's very essential to study. I hope that you have realized that you are in grade 9 now and you must have a regular studying schedule और आपको उस schedule को properly follow करना है. अपनी स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं और ढेर सारा पढ़ना है ताकि बहुत अच्छी पोजीशन आए, ठीक है, बहुत अच्छे ग्रेड आए. सारी उम्र ये ग्रेड हमारे साथ अटैच्ड रहते हैं. क्या करने लगे हैं हम आज? लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड एंड लेट्स फाइंड इट आउट. जी बेटा, व्हाट इज द बोर्ड टेलिंग यू? द बोर्ड इज टेलिंग यू दैट वी आर डूइंग यूनिट 2 of your textbook and the title of the unit is Patriotism and the page number is from 12 to 20. ठीक है, Patriotism का क्या मतलब होता है? Patriotism का मतलब होता है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत करना, अपनी वतन पे जान निछावर करना. ठीक है, बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है हमने पाकिस्तान. ठीक है, तो इससे मोहब्बत करना हमारा फर्ज है. अब बेटा हम आज करेंगे पैट्रियटिज्म के क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर पार्ट. क्वेश्चन आंसर्स से शुरू करते हैं. पहला सवाल आपका ये है कि हाउ डू यू डिफाइन पैट्रियटिज्म. ये क्वेश्चन आंसर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं. आपको 8 में से कोई से भी 5 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं. हर सवाल कैरी कर रहा होता है 2 मार्क्स और इस तरह से ऑल द 5 क्वेश्चंस आर कैरिंग 10 वेरी एसेंशियल मार्क्स. मैंने आपको बोर्ड पे इनके आंसर्स फ्रेज आउट कर दिए हैं, फ्रेजेस में लिखे हैं, पूरे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं किए. मैंने आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दिए हैं ताकि आप इनको बुक में से फाइंड आउट करें, इनके कंप्लीट फ्रेज्ड आउट सेंटेंसेस लिखें और इनको जल्दी जल्दी अच्छे से मेरा बेटा याद कर ले, क्योंकि हमको अपने 10 मार्क्स किसी भी सूरत में लूज नहीं करते. उसके अलावा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन पैट्रियटिज्म, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव पेपर के. तो बी वेरी वेरी क्लियर, बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, ठीक है, एंड मेटिकुलसली लर्न ऑल दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स. डू नॉट लीव एनीथिंग इन नॉट टू लूज एनी मार्क्स, ठीक है, सो दैट यू डोंट लूज एनी मार्क्स, राइट. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. हाउ डू यू डिफाइन पैट्रियटिज्म? Patriotism can be defined as the love for the motherland or the devotion of one's country. Patriotism can be defined as the love you have for your motherland or the devotion that you have for your country, right? Second question is, what are the qualities of a patriot? मैंने आपको helping phrases लिख दिए हैं, आपने sentence construct करना है. मैं आपको verbally constructed sentences दे रही हूँ. चाहो तो मुझे यही रोक के साथ पे साथ अपने sentences, अपने answers लिख लो, ठीक है. What are the qualities of a patriot? ठीक है, the qualities of the patriot are as follows. Number 1, a patriot loves his country. Number 2, a patriot is willing to sacrifice when the need arises. Number 3, a patriot safeguards the interests of the countries. So these are the 3 qualities of a patriot that a patriot must have, and you are going to write them in your answers. As a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? And the answer is, as a citizen of Pakistan, we should always and always take care and conserve our natural resources. पाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है? छोटा सा पाकिस्तान है, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि हमारे पास दरिया भी हैं, हमारे पास मैदान भी हैं, हमारे पास सहरा भी है, हमारे पास समंदर भी है, हमारे पास लेक्स और पॉन्ड्स भी हैं, हमारे पास पहाड़ भी हैं. अल्लाह ताला हैज गिवन अस एवरीथिंग, तमाम मादनियात, तमाम रिसोर्सेस. सो एज अ पाकिस्तानी वी मस्ट कंजर्व ऑल ऑफ देम. ठीक है, एज अ पाकिस्तानी,
ठीक है, what are our duties? The second duty is that we must study well and become productive members of the society. ठीक है, हमको बहुत 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 पढ़ना लिखना चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकें. And third is we must obey laws to maintain peace and order. Empowerment of law is very important. ठीक है, जहाँ लॉ और जस्टिस प्रिवेल करता है वो सोसाइटी हमेशा स्टैब्लिश करती है, प्रिवेल करती है. और जहाँ जुडिशियल सिस्टम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेटसेस, देन द सोसाइटी डज नॉट प्रिवेल, राइट? सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, what makes us stay alert in the wake of foreign invasion? Wake of foreign invasion का मतलब है इट्स अ फिगरेटिव लैंग्वेज एंड विच मीन्स के फॉरेन इन्वेजन के खतरे के खिलाफ. ठीक है, वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन अगेंस्ट द अटैक, अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ बीइंग इन्वेडेड बाय द फॉरेनर्स. एंड द आंसर इज द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म. एंड देन यू आर गोइंग टू कॉपी डाउन द कंप्लीट सेंटेंस. Makes us stay alert in the wake of the foreign invasion. Next is, how will you elaborate Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's quote? We must develop a sense of patriotism that galvanizes us all into united and strong nation. इससे आप क्या समझते हैं? तो आपने अपने आंसर में इस तरह से शुरू करना है, For me or to me, the quote of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah expresses that we must develop a sense of patriotism and that we should be bound in one united and strong nation. To me, the quote of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah says that we must develop a sense of patriotism that will bound us into one united and powerful or strong nation. It is helpful. The quote is helpful in removing all provincial and racial discrimination or differences. And thus, the word patriotism, the feeling of patriotism, always makes us united. We have additional questions. You know that I always bring additional questions. Those are the questions that are 1 in your review exercises and 2 I have picked from previous papers. So these are extra questions that I am giving you in order to help you prepare yourselves fully for the paper, fully for your objective and subjective both the paper, because these may come in a separate sentence construction. ठीक है, these can be rephrased and given as an objective. Number 1, who offers sacrifice for his country? A patriot offers sacrifice for his country. This can come in an objective paper as well. A dash sacrifices for his country. Patriot, farmer, whatever, right? Whatever the options can be. And you need to fill in the correct answer, that is a patriot. This was question number 1. Let's move on to the question number 2. G. Question number 2. Who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Now this can be tricky. वो आपको अल्लामा इकबाल भी दे देंगे, लेकिन ये याद रखिए कि अल्लामा इकबाल led us to the thought and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah led us to the reality. अल्लामा इकबाल led us to a dream. And Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah interpreted that dream into reality. So you must answer this question with Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. But complete phrase it out like Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah led the Muslims of the subcontinent in their struggle for the separate homeland. If you will not write the complete phrased out answers better, you will not get 2 into 2. देखो, अगर आपने एक बच्चे ने लिख दिया Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, एक बच्चे ने पूरा फ्रेज्ड आउट आंसर लिखा, तो एग्जामिनर तो ये कहेगा ना कि जिसने ज्यादा टाइम लगाया है मैं उसको फुल मार्क्स दूं, ऑटोमेटिकली वो आपको 1.5 देगा या 1 देगा. ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप उस बच्चे को हासिल करने का मौका ना दो, अपने पास भी उतने ही मार्क्स अपने बैंक में सेफ रखो. ठीक है,
नेक्स्ट इज what is the highest military award for Pakistan? निशान हैदर is the highest military award for Pakistan. We all know that. ठीक है, अगेन ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं तीनों सवाल जो एडिशनल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, और ये आपके इस तरह से भी आ सकते हैं, मैंने पास्ट पेपर से पिक किए हैं, आपने इनको नोट डाउन करना है और इनके आंसर्स भी नोट डाउन करने हैं, लेकिन कंप्लीट फ्रेज्ड आउट आंसर देने हैं, इनकम्प्लीट से आंसर्स नहीं देने, राइट। अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट में। ग्रामर पार्ट में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ मॉडल्स के बारे में है। मॉडल्स के लिए आप मेरा मॉडल वाला लेक्चर देखिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मॉडल्स वो होते हैं जो आपका मूड बताते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर मूड एट दैट टाइम, द वर्ब्स दैट एक्सप्रेस योर मूड आर कॉल्ड एज मॉडल्स, राइट। पहला क्वेश्चन आपने ये लिखा है कि डिस्क्राइब, इसमें पहले एक्सप्लेनेशन है आपकी अच्छी खासी, और उस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको आंसर करना है। अगेन ये इस तरह के सवाल जो हैं वो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जो नीचे सवाल हैं सारे ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं और इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करेंगे। डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, आपकी बेस पे आंसर लिखा है बच्चे। ये मेरी एबिलिटीज ये कैपेसिटीज नहीं है, मैं इनसे बड़ी हो गई हूँ, बहुत बड़ी हो गई हूँ, ठीक है। आई कैन लिफ्ट हेवी वेट्स, आई कैन लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स, ठीक है। आई कैन लिफ्ट दिस एंटायर बोर्ड, ठीक है। और आई कैन लिफ्ट द पोडियम at the back I was standing in the beginning of the lecture. So this is something that you can brag that you can do, right? I can clinch the first position in my exam. I can clinch the first position all over Punjab, inshallah, right? Inshallah. And I can learn the summary of this lesson very easily. I can learn the summary of this poem very easily. So these are models can. They are showing the mood that the power you have in order to do something, ठीक है। आपकी अपनी will, आपकी अपनी strength, आपकी अपनी power कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। can, अच्छा जी। ask teachers permission to go out, आसान है। miss, may I go out? I had one of the students who said, miss, may I go out, take the round of the school and be fresh? So yes, you can go out, take the round of the school and be fresh, right? Ask a friend to lend you a book. Can you please lend me this book? Or can I please borrow this book from you? Right? Can I? Express necessity to get up early. I must get up early in the morning for the morning walk. I must get up early in the morning to jog. I must get up early in the morning to exercise, right? Express duty or obligation to follow the traffic rules. We should always follow the traffic rules for the correct flow of traffic. We should always follow the traffic rules in order to avoid accidents, right? Share some past habit. I used to sleep a lot. I used to walk every morning for half an hour. I used to stammer as a child. So you can have a lot of past habits that you have stopped right now to be discussed over here. But remember, the word that you are going to use is I used to. Alright, these were the 6 questions. Let's move on to the 7th statement. अब इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है? अब इस स्टेटमेंट में उन्होंने आपसे ये कहा है कि ये सेंटेंसेस लिखे हैं, आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया असर्टिव। असर्ट किया है आपने ये बताया है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, आपने ये बताया है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। What a beautiful painting. W शुरू हुआ है, what word है? It's ending with an exclamation mark, ठीक है। और जब ये exclamation mark के साथ end हो रहा है तो ये कौन सा sentence हो गया? Exclamatory. This is an exclamatory
सेंटेंस, ठीक है। टीच हिम टू लर्न, टीच हिम टू लर्न और टीच हिम टू लर्न कौन सा बन गया? इम्पेरेटिव। क्या होते हैं? ऑर्डर्स और कमांड्स और रिक्वेस्ट्स क्या होते हैं? इम्पेरेटिव्स, ठीक है। हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो यू वांटेड दिस पेंसिल, और हाउ वुड आई नो you were looking for your eraser, right? So this is a question, right? And the last sentence, she did not make a false statement. Not present है, क्या हो गया? बोलो, negative. चलो भाई, सारे सेंटेंसेस हो गए। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं। ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं करना है, पूरे फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है। साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव करें, साथ साथ ट्रांसलेशन करें, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स करें, किसी में भी मार्क्स लूज नहीं करने, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द पंक्चुएशन। ग्रामर पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर बी था, जिसमें आपको उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था और आपने उसको कहा था कि आपने उसको पंक्चुएट करना है, ठीक है। चलो मेरे साथ पंक्चुएट करते हैं, साथ साथ पंक्चुएट करती हूँ, बताती हूँ, आप नोटिस करो, ठीक है। कैप्टन मोहम्मद सरवर, ऑब्वियसली कैप्टन मोहम्मद सरवर। अब यहाँ पर नाम खत्म हो गया, कॉमा डालेंगे। मेजर तुफैल अहमद, नाम खत्म हो गया, कॉमा। मेजर अजीज भट्टी, कॉमा। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, कॉमा। मेजर मोहम्मद अकरम, कॉमा। मेजर शबीर शहीद, कॉमा। कैप्टन कर्नल शेर खान, and है, so no commas, and हवालदार लालक जान, all embraced martyrdom, ठीक है। अब ये सारी लिस्ट है, तो हम यहाँ पर लिस्ट के बाद एक हाइफन डाल देंगे, ठीक है। all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland, सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। all of them were rewarded Nishan dash A dash Heather, comma, the highest military award given to the great patriots who laid down their lives for the country. ठीक है, हमने क्या किया है? हमने सारे प्रॉपर नाउन्स को कैपिटलाइज किया है। हमने हर नाम के बाद उसको सेपरेट करने के लिए कॉमास डाले हैं। लिस्ट एंड हुई है तो हाइफन डाला है, निशाने हैदर के बीच में डैश डाले हैं और फुल स्टॉप डाला है सेंटेंस एंड होने के बाद, और हमने एक कॉमा डाला है। जो एक्स्ट्रा डिटेल हमने प्रोवाइड की थी इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, ठीक है। तो यूं हमने इस कंप्लीट पैराग्राफ को पंक्चुएट कर दिया है। आई होप यू हैव पंक्चुएटेड विद मी। क्विक रिकैपिचुलेशन कर ले आज के लेसन की। आज हमने किया यूनिट 2 पैट्रियटिज्म। इस यूनिट के हमने किए क्वेश्चन आंसर्स, हमने किए बॉक्स या एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स, और हमने की सारी ग्रामर एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल बी ब्रिंगिंग यू the creative writing topics of this specific unit. By that time, it's Faiza Nadeem signing off for now, and inshallah, we'll meet soon again in the next lecture. Allah Hafiz.